Absent. How many are only today coming? Just stand up. Only today coming after long gap. And she also. Since last week. Last week you're not there. So except one child, I should not teach all of you guys. Anna? You ask me why, I tell you. What kind of regular admission or attendance you follow? Sir, exam was there. Now, besides exam, there might be any other reason. You told some when I met her in weekly motors. Exams were approaching. Approaching. Exams are The going. next Wait, day I'm asking. The next day was science exams, that's why I didn't come. No, but if you have your attendance like this, how would I help you to get some 100% results? No? Tell me. But this exam has become a real fever, is it? Exam absenteeism, I will not help you with that. There are many children during the exam, they come. I understand your exam is that. Are you studying and getting good marks in the exams also? There also. Don't tell me. It is just an excuse. अभी मैं तीनों का चारों का पेरेंट को फोन लगा के पूछूं इधर से छुट्टी लिया बच्चे ने क्या मार्क्स लाया I want the marks. If you are below 90%, whatever is the total, below 90%, I will not allow you to sit in my class. Right now, I'll do it. If 40 was the marks, everyone should get at least 35 or 37 and above. Not, why do you take a leave then? Huh? At least say the PT mein to aaya. Where were you? Why didn't you join the PT? Tell me. All time exam. This I will not allow. You are not coming, no problem. Parents, there are many parents without the children. I came with the father. You tell him where I was sitting. Because I was stuck up in Sanpada. Where I was roaming around there. And you came for the meeting, I think. You didn't come for the meeting, dear. Hey, what happened? Why? Stand up, stand up. I will not allow this. You also didn't come for the meeting. Tu to parents ke sath padhta rehta hai. Right? Tell me one good solid reason why didn't you not come for the meeting. आपने बोला, but parent आया कि नहीं आया पूछा? But why? There's no reason. They are least bothered. Stay in the same house, is it? Then what is that? I don't know. Are they bothered for come and meet? Yeah, but then I did the day before that there was a school meeting. So they are tired of making the same complaint everywhere. So complaint रहेगा तो ही नहीं आएगा. If there is compliments, you understand the difference between complaints and compliments, ना? Compliments रहेगा तो आएगा बार बार सुनने. ये इस बच्चे का मैं तो हर साल कंप्लेंट ही करता हूँ. उसका पापा आता है रेगुलरली. पूछो उससे. है ना रे? हाँ. Last year जितना complaint कम किया, this year I got more complaints for him. Is your papa said I will not come? In fact, he told me, anytime आप फोन करो मैं आ जाऊँगा. All five, give me a letter in writing before I finish my second lecture. Which date to which you were absent, and why were you absent, and how many lectures you missed. 3. The 3 points I need. Which day to which way you are absent, how many lectures you missed of mine. In that, how many chapters have you covered. We find out the road. Whatever. I'm not saying that you missed all my lectures. Whatever you missed it, in that day, what did I taught? As with the student. इतना तो अभी मेरे लिए करके दिखाओ. चलो बैठो. Understood what I'm asking? चलो. In the break, not now. चलो. Tell me. What I was doing. What I was doing? We remained seriously ill. My health issue started right from Saturday evening. Sunday, done.
Monday also done. Monday I couldn't even get up from my bed. Then also I took two of my lectures in economics. The whole life I might not have seen bad time like Saturday evening से लेके Monday evening तक मैं सो ही रहा था. Come here. What is your reason of coming late? What is your reason? No, come in the second lecture. Go. Despite that, I took off my 3 hours lectures. I couldn't go to my college because early morning, forget about getting, I was not even able to speak. Jaiye jaldi, don't waste my time. Talk to your coordinator. Today also my throat is not 100%. But then, you just need one timetable. Exam start हो रहा है, UT को बंद करो. What logic do you apply? एग्जाम स्टार्ट करें यूटी को बंद करो बट उधर भी कुछ नहीं इधर भी कुछ नहीं परफॉर्मेंस वाइज टेल मी व्हाट आई वाज डूइंग लास्ट क्लास completed it I just started it what was the last one of globalization now write the next heading struggle for fair globalization. Whoever hears my story in my staff or in my family or friend, they say we is just joking. ऐसे ही बहाना बनाता रहता है, enjoy करता रहता है और बोलता है कि तबीयत खराब है. Whoever called me once or twice, they didn't even recognize my voice to speak. Because this dedication as a teacher I am showing, I want at least dedication from my students who are almost half my age, even not even half my age. हाँ मैं देखा तू आ जा बेटा तेरे लिए तू शायद से ओए sit down हाँ ठीक बीच में आके भाग जा what happened what did she say I will not allow you I'll allow you in the second lecture today why late. Tell me the reason you slept is it today also? Then, give me the reason. I'm not punishing you. I'm asking what is the reason of coming late. Wait. तो बाहर बैठ के पढ़ाई करो second lecture में close the door don't waste my time. Write down the heading struggle for fair globalization. That's what we will do. Na? Write down. In fact मैंने mark कर दिया. Write down. Globalization. These guys are saying I have not done it, but I think I have done it. Yes, sir. एक दो लाइन देता हूँ. Is a mixed blessing. Globalization is a mixed blessing, mainly for developing countries of Asia and Africa. Mixed blessing, mainly for developing countries of Asia and Africa. So, second point, write quickly. So, the struggle for fair globalization. अभी स्टार्ट किया जा रहा है. So struggle for fair globalization begins with हमने फॉरेन ट्रेड कर लिया था I know ये भी कर दिया था but these new people who have joined भी के लिए दोबारा कर रहा हूँ. हम लोगों को कंटिन्यू करना है भाई वो एग्रीकल्चर खत्म हो गया हम लोग इकोनॉमिक्स में. नहीं सर हमने तो नहीं किया था. चेक सर आपने लास्ट टाइम बोला था Yeah, importance of बॉर्डर मतलब एग्रीकल्चर खत्म नहीं किया. नहीं सर हमने क्या किया लास्ट ईयर हम लोग ग्लोबलाइजेशन कर गए थे. वो खत्म किया मैंने. एग्रीकल्चर नेक्स्ट क्लास करेंगे. हाँ बट ग्लोबलाइजेशन खत्म हो गया है. अच्छा एक लाइन लिख दो फिर आई जंप टू एग्रीकल्चर.
So the government needs to be proactive. So the government needs to be proactive, satisfying the local needs. So the government needs to be proactive. मतलब पहले ही सोच के रखिए. To satisfy local demands without hampering the foreign investors. Agree with that? check लास्ट किया हमने बट ग्लोबलाइजेशन खत्म कर दिया मैंने चलेगा गुड एक काम करो now those who have missed my lecture you take the notes of agriculture from him or and from her I'll just go and put my vehicle into a safer place because I was late for 3 minutes so I just rammed my two-wheeler and I came back एक बंदा बोला था उठा के लेके जाएगा मैं बोला उससे ज्यादा मेरा स्टूडेंट इंपॉर्टेंट है मैं उसको जाके जरा अपने जगह पर लगा के रहा ठीक है और कैसे I can send you if you are above 18 नहीं सर टेस्ट लिख के आओ टेस्ट लिख के आओ करेगा नहीं अभी मैं 5 मिनट में आ Upgrade the beach for ये सुबह में ये सब बात कर रहे हैं See, it's already 1 spacious about developer. सही है चेक कर एक बार लिखा है कि नहीं लिखा ग्लोबलाइजेशन फॉरेन ट्रेड I don't think so. Like, लिखा है I asked us to do like party. मैंने खरीफ और रबी का लिखा हुआ है खरीफ और रबी खरीफ और रबी फॉरेन ट्रेड अबे तू बस समझो अच्छा इकोनॉमिक पैटर्न हो गया इकोनॉमिक पैटर्न कैसे ये फॉरेन ट्रेड पागल है रे Did you share? It's like, it's
होगा नहीं किसका? मैं वॉशरूम गया था। अरे लिखा है खबीर का अरे क्या हो रहा है एक्शन का फिर अरे मेरे उंगली में पिटा ही है ये वोल्टेज मिल गया यार ये चीज बहुत इजी है कौन सा आइडिया पूछ रहा है जो मेरे फोन में साक्षी में चलो भी देखो देखिए ये तो खेलना है यार कैसे बात कर रहा हूँ एक जो जो भी क्या है एक कलर में पढ़ा है जेंडर का कलर वाला This was what going on. सर I could have connected this to my mobile and went down. Okay. सर एग्रीकल्चर प्रॉफिट पार्टनर का किया हुआ है यार मुझे एक बताओ कभी कोई चालू है because now I'll maintain my personal diary because certain lectures they've asked me to do it that whole chapter again. I don't know that much of love and affection for my lecture. एंड में बोले सर ये तो आप दोबारा किया चैप्टर पूरा खत्म होने के बाद अच्छा क्रॉपिंग पैटर्न हम लोग ने किया है बट टाइप्स ऑफ फार्मिंग नहीं किया ना हां टाइप्स ऑफ फार्मिंग नहीं हाँ चलो वो डाल दो देना कर लिया सर टाइप्स ऑफ फार्मिंग के बाद ये Sir, we have finished in paper crops. हां मैं वो भी खत्म किया Yes, we only have to do from this. टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म्स और एक ही क्लास का बच्चा टीचर इज वन ऑल द थ्री बच्चास आर गिविंग मी डिफरेंट इंफॉर्मेशन मैं ग्लोबलाइजेशन बोला सर वो बैठ जा मैंने मुझे किसी ने बोला जो ज्यादा हाइट हो जाना उसका दिमाग है ना घुटने में रहता तेरा तो उससे भी नीचे चले हाँ उसके कैमल का दिमाग नहीं होता मालूम है ना कैमल कभी जाके उससे पूछ हाँ नहीं रहता those who are small packets like our own little friend they are more brainy एग्जाम में मार्क्स नहीं आता देखो brainy is not in the wait मैं उसका आंसर करता हूँ brainy is not always in education always in तो ऐसा सचिन भी कितना हाइट है स्टेम से सिर्फ 2 इंच ऊपर रहेगा वो बंदा and anybody can break the record of him विराट कोहली बाबा वो इतने साल के बाद ना when he played he had seen people who are double his height छोड़ दे सचिन के बारे में बोलते थे हाँ राइट डाउन टेक्नोलॉजिकल है ना यही है ना एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स so don't think that short people are in fact there is a big saying good things come in small packets institutional reforms हाँ आईफोन का बोल रहे हो he's right all the cheapest phone will come in this much of dabba but the costliest phone only phone के साथ इतू से रहता है उसका कुछ भी नहीं आंसर भी नहीं रहता हाँ तो फिर राइट अप फोन भी नहीं रहता कभी कभी सिर्फ काली खोका बेचता नहीं साबुन भी नहीं no he is asking answer he's going to purchase tomorrow only right up soon after independence अरे बाबा लिखना soon after independence Indian government introduced सुना नहीं मैं अभी मेरा गाड़ी उठा के एक जगह से दूसरा एक अंकल का लिखेगा ये कहाँ गया रहेगा कहाँ मिलेगा तो देखो मैं अंकल उस तरफ रखा था हाँ आप होशियार लग रहे हो बट मेरा तो था कि गया
मतलब आपने एक के पीछे एक क्यों लगाया, पर इधर किधर लिखा है एक के पीछे एक लगाने के लिए, पर नीचे लिखा है तो किधर है, वाशी लिखा है, जाओ वाशी। मेरे सामने एक बंधु आ रहा है और लॉक लगाने जा रहा है, पर तू बंधु they have just stopped the car and ये बूढ़े लोग को आदत है ना इधर भी खड़े रह के बड़बड़ करने का, अंकल जाओ जाओ लॉक लगाने आता है, कहाँ बेटा, मतलब वीक में लगा जाओ। Soon after independence, Indian government witnessed or brought about, witness मतलब brought about several technological reforms, to upgrade and improve the overall agricultural production. Upgrade and improve the overall agricultural production. Full stop. Which are, don't say full stop, comma, which are. Because let me explain this heading. When I'm giving it, becomes very clear for you. Because I think we need a reform. Do you think you also need a reform? Very blind question. Huh? What kind of reforms you need? One, no question papers, no answer sheets, no exams. India में आ रहा है by next year, NEP के अंदर है, but up till 8th standard. 9th and 10th will have a new set, 2 board exams. Whichever you score good, that board exams tally will be taken for your admission. Local languages are given highest importance. After 10th standard, there is no stream called arts, commerce, and science. All are 11th only. You can shift from one after doing 6 months. If you don't like, you can shift to B course. Abhi, I don't know what that course. Samajh mein aa raha what I'm saying? And mainly practical based exams रहेगा. Projects, assignments. तो कल रात को एग्जाम है तो आज बैठ के पढ़ाई करके कल वॉमिट करके स्कॉलर नहीं बन सकते. साल भर आपको मेहनत करना पड़ेगा. ये रिफॉर्म्स है, अभी आया नहीं है. Already 4 South Indian states have taken, and Maharashtra is already taken. By next year, it will be implemented. 11th, 12th में रहेगा. So why I'm saying this? When India became independence, at least in agriculture, it required which reforms? Technological. Abhi I say simple. If you know what is a Persian wheel, you know what is a Persian wheel? हाँ, ये महाराष्ट्र में भी था और all over India भी था. कुआं के अंदर एक बड़ा wheel जैसा रहेगा, and a bucket-like thing will be attached, and the bull will be pulling it. And when it dips inside that kuwa well, it will dip the water and pour the water. Now it is no need of a Persian wheel. I can say we have a motor. Earlier we had bullocks, or we can say plow. Wooden plow tha, है ना? Now what is plowing our field? Tractors. We see it rarely, but 90% of the people use a tractor. Correct? And to transport, we had carts or bullock carts. But now we have a trucks. What is this? Technological reforms. I mean, 90% of the farmers have an electrified motor pump. पहले डीजल का मोटा पंप रहता था, अभी तो इलेक्ट्रिसिटी मिलता है. And my own cousins who have a big farm, they don't come back to houses for weeks. बोला किधर है? बोला पिछला हफ्ता गया था खेत में, अभी तक आया नहीं. कर क्या रहे उधर? बोलते उधर टीवी सेट लगाया है, एसी लगाया है. हाँ, सब उधर ही रहता है वो. Because very easy ना, पूरा दिन भर वो खेत देखता है, बाकी खाना वाना उधर ही बना के सो जाता. उसका मेन घर से भी वो घर काफी अच्छा लगता है. In between the farm, lot of fresh air. और बोलते क्या करता है? सुबह 5 बजे उठता हूँ, जो भी काम है खा पी के दोपहर, फिर शाम को वही काम करके सो जाए. 1 week he comes back to home. Can we imagine अगर हमारा लाइफ ऐसा होगा तो क्या सर, लाइफ नो होमवर्क, नो स्कूल, नो टेंशन. एंड नाना करके वो बोलता है महीने का 12 से 15 लाख रुपए मैं कमा लेता हूँ, बस इतना ही है. मैंने बोला इधर 12 से 15
हाँ वो थोड़ा सा कम हो गया अभी इनकम। मैंने कहा फिर क्या, हाँ तेरे जैसे में प्रोफेसर खुद ही है। बोला ठीक है, तू प्रोफेसर नहीं है तो अंबानी का छोटा भाई है। सिर्फ उसका आई रिमेम्बर नॉट मोर देन 300 to 500 कोकोनट ट्रीज आर देयर। हाँ, एंड देन वो क्या बोलता है, उसका जो वेस्ट डालता है वही लाखों में कमाता है। क्यों क्यों थोड़ी है, थोड़ी है, I don't know because every time is the reason, and now she every time अरे कैसा है so what we try to understand, देखो farmers are having so much income, government subsidies देता है, loans देता है, waiver देता है, income tax नहीं है, सोसाइटी चार्ज नहीं है, मेंटेनेंस चार्जेस नहीं है ना, लेट फी नहीं है। अंडरस्टूड व्हाट आई एम सेइंग? फ्री स्कूलिंग, फ्री हाउसिंग, फ्री इलेक्ट्रिसिटी, फिर भी फार्मर अपने आप को गरीब हो। व्हाट डज इट मीन? दैट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आफ्टर 1947 वांटेड टू ब्रिंग विच रिफॉर्म्स? टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म्स। ये समझ में आया? आई कैन से इवन रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन इज आल्सो वन टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म, because now motor pumps can be run through what? Run through electricity. Now what is this institutional reforms? Let me discuss, then while writing only you will understand. Anybody have doubt in technological reforms? Easy. Let us write this first. Right up. Point number 1, use of Persian wheel. Use of Persian wheel was replaced by motor pumps. Use of Persian wheel was replaced by motor pumps. Second point, flow. You bracket, you write manual. Actually animal है, manual नहीं है. Was replaced by modern tractors. Was नहीं है, easy use. Is replaced by modern tractors. Next, cars, बुला कार्ट भी लिख सकते हैं, are replaced by modern trucks. Cars are replaced by modern trucks. In your school, the 15th August celebration is on the way. You guys are not participating. 10th and 12th ना, अभी मेरा तो उधर 12th का स्टूडेंट्स है, 11th स्टूडेंट्स अभी CBSE ने सर्कुलर भेजा है, तो पार्टीशन डे के पर कुछ ड्रामा वगैरह करने को। You know what is partition? India got independence on 15, Pakistan got independence on 14, हमसे एक दिन पहले। But the horrors, you know what are the horrors? अभी CBSE का डायरेक्ट उनको मैसेजेस आता है, तो क्या बोलते हैं, when partition was planned, more than I don't know how many millions of people have died. जो ट्रेन यहाँ से अथारी बॉर्डर है हमारा, अथारी बॉर्डर सुना है जहाँ हमारा फ्लैग होइस्टिंग एवरीडे होता है, देखा है ना? वो कमांडोज नहीं जवान जी है, एंड वहाँ से जो भी ट्रेन पाकिस्तान पेशावर के लिए गया, we massacred many people. Similarly वहाँ से जो हिंदू इंडिया में आ रहा था, वहाँ के मुसलमानों ने उनको मारा और काटा, जो भी है। अगर वो कश्मीरी पंडित, वो कौन थे मालूम है? कौन थे? This partition people who settled in Kashmir, 95% of the population of Kashmir were Hindus only. फिर ये मुस्लिम अंदर कैसे घुसे, उसका बहुत बड़ा हिस्ट्री है,
कभी आपको प्रेम में सुना था। एंड वो कश्मीर का नाम ही हमारा एक बहुत बड़ा गुरु था जिसकी वजह से नाम कश्मीर पड़ा, हरण्य कश्यप। अब अगर मेरे पर भरोसा नहीं करेगा ना, डिस्कवरी या गूगल में कर, so at least 15th August you guys are going to school, no? I mean UP has given a holiday and normally sir never gives any holiday. लास्ट ईयर नहीं दिया था ना, हाँ नहीं दिया। 26 Jan we will take a holiday, 15th August we got this year। अगर आप स्कूल नहीं जा रहा है, get up early in the morning, no problem, you are going to school, you can celebrate flag hoisting with our Prime Minister of India। How simple। आपको हंसी आएगा, ये तो मैं हर साल घर पे करता हूँ, मैं सोसाइटी या पॉलिटिकल पार्टी में नहीं जाता हूँ। When our Prime Minister is hoisting, you also stand up। आपकी मम्मी तो किचन इधर उधर भागती रहेगी, उसको भी बोलना 1-2 मिनट शांत एक जगह पर खड़े रहे। पापा या तो सोते रहेंगे या तो न्यूज़पेपर के साथ बैठेंगे, उनको भी बोलो खड़े होने के लिए। Till Mr. PM does it and the national anthem is done, stand for 2 minutes। है ना? Sorry, अगर anybody Islamic people here, I've seen they do the namaz even in the running train। ठीक है? हाँ, रनिंग ट्रेन में भी वो करते हैं, वो टॉयलेट चटाई पे जाके वो नमाज अदा करता है। हम करेंगे, हमें उठना है। आई एम नॉट एनवी ऑफ देम। हाउ 5 वक्त का नमाज लोग किधर भी करता है, 5 वक्त का नमाज। हम लोग तो वेरी स्पेशल डे फॉर, आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। एंड उसके बाद आपका जो भी नाश्ता पानी है, जो भी है लेके बैठो, लेट दैट चैनल रन, यू विल सी ऑल काइंड्स ऑफ things what, and if you are watching a DD, best, because DD में ad minimum रहेगा दूरदर्शन में, and there are 2 commentators, one is in Hindi में उनका नाम भी बोलता हूँ और एक इंग्लिश में रहेगा, too good, and that is the time you will understand India के पास weapon structure क्या है, और इंडिया पूरा तो नहीं बताता इंडिया, फिर भी, so feel very proud। 15th August जल्दी उठो, और पता नहीं आप अपना भगवान को क्या प्रेयर करते हैं कि नहीं करते हैं। एटलीस्ट ऑन दैट डे प्रे दैट whoever soul has been died, we are working for that soul। that's all, 1 or 2 अंडरस्टैंड। गांधी नेहरू का तो नाम फालतू में आता है, सॉरी टू यूज दैट वर्ड फालतू। हाँ, innumerable citizens have died, innumerable। अभी पता नहीं आपके खानदान में कोई नाना या दादा रहा होगा, अगर वो फ्रीडम फाइटर थे, उनका हिंदी में क्या बोलते हैं, जज्बा, आज का पुलिस भी नहीं बता सकता। They have got the beatings। मेरा डैड का डैड थे, ऐसा बोला है, मैंने तो देखा भी नहीं है। He got beatings from the British around 13 or 14 on his back। तो मेरा पापा बोलते थे, मैं मेरा डैड का कल नहीं बन पाया। My पापा was a डरपोक fellow, to be very frank, sorry if you get a feel, but then that is fine। मेरा पापा बोलते थे मुझे नहीं, बट मेरा अंदर थोड़ा सा है, बट मुझे एनसीसी में मेरा स्कूल ने इसलिए नहीं लिया कि तो पढ़ाई में अच्छा है, एनसीसी में नहीं था। हाँ, मतलब नेशनल कैडेट ऑफ कॉर्प्स व्हिच माइट लीड इनटू सम डिफेंस कोर्स, बट देन मेरा स्टूडेंट अभी ये बंदा बोल तो रहा है 2 साल के अंदर इसका खोपड़ी में क्या आएगा गॉड knows। हाँ, एटलीस्ट वन ऑफ योर फैमिली मेंबर बिकम अ सर्विसमैन, यू विल सी व्हाट रेस्पेक्ट यू विल गेट। एंड डिग्री होने के बाद मिलिट्री, आर्मी, नेवी में जावा, अगर 10th पास 12th फेल गया ना, तो आपको मिल जाएगा, बट यू विल बी होल्डिंग अ गन एंड मेड यू टू स्टैंड इन दैट। ऐसा नहीं कि वो इंसान नहीं, वो भी है, बट आप अगर अच्छे पढ़ाई लिखे जाएगा तो यू विल बी होल्डिंग अ हाई पोस्ट। आई हैव सीन हाउ मच रेस्पेक्ट अ कमांडर और आईजी ही गेट्स इट। मैं जब बोर्ड एग्जाम यूपीएससी लिखने गया तो कमिश्नर केम फॉरवर्ड टू हेल्प मी, सीबीडी बेलापुर, और फोन करके पढ़ाई कर रहा है, बोला हाँ सर, कुछ डाउट रहेगा तो आने का। उसका और मेरा कोई संबंध नहीं था, आई वेंट टू मीट फॉर अ डिफरेंट केस। मेरा जो बंदा लेके गया उसने बोला ये सर ये यूपीएससी लिख रहा, अच्छा तुम बैठो बात जाओ। he gave books, he guided me, मतलब मैं आईएएस नहीं बना, तू मेरे से ब्रिलियंट दिखता है, तू बन। एंड he asked me, सर एक पेपर में गया, डोंट वरी नेक्स्ट टाइम लिख, किधर नेक्स्ट टाइम लिखा। So this is what Independence Day is all about। I think I'm not a history teacher, but I understand history much detail। तो at least बोलते ना 2 मिनट के लिए खड़ा रहो, and you will see Indian Army और Indian Navy और Indian Air Force is doing their level best। ये जो कश्मीर के अंदर जो नाटक चल रहा है, ये 3 महीना होने में, what
what kind of attacks India is going through. Already doing it. ऐसा नहीं कि नहीं कर रहा. Indian Prime Minister is the only Prime Minister who can stop the Ukraine war. And जा भी रहा है हमारा मोदी. After the celebration is directly going to meet Ukraine. अगर उन्होंने full stop रख दिया war को, understood what I am saying? Even American president cannot ask Mr. Putin to stop the war, but he has already said it in front of everyone. तो इंडिया का अगर प्राइम मिनिस्टर का फोटो देखेंगे ना हमारे मनमोहन सिंह बेचारे 20-40 में किधर तो कोने में चिपके खड़ा रहे. But हमारा मिस्टर प्राइम मिनिस्टर whoever it is, he has made India to come forward. President of America is giving him a hand, come forward, stand. उसके बाद फोटो क्लिक होता है. अब तक फोटो क्लिक नहीं होता. Out of around 36 prime minister, Indian prime minister was a bit late, so they are waiting for Mr. Modi to come. ये उसका respect नहीं है. आप लोग क्या? Are we carry forwarding the respect? वो तो दिखता ही है. मैं 5 मिनट के बाद से. तुम्हारा जो shoulder है ना, it is too young. But try to see that हमारे shoulder में हमारा पूरा देश है. इसका मतलब ये नहीं कि इसको या इसको पकड़ के मैं आर्मी में डाल दूं. Whatever studies you are doing, do your best. Simple. For last 17 or 20 years, I am teaching. But if I am not there, I can invoke that feeling in you. Have you seen an Indian licking the shoe of a British fellow? Not even licking, na? हाँ. उसने बोला मेरा जूता को साफ कर. Indians have done it. So what we have gone through and what we are and what you will be maybe like next 10 years. You should वो बोलता ना एक गाना है जरा आँखों में बदलो पानी कर. लेकिन लता मंगेशकर का गाना. तो कभी सुना उसमें क्या? Sorry. So, I read the CBSE message. अभी कल मैं yes, lecture note, रफ रहता है 0.22% ऐसा कुछ नहीं है. क्यों वो 0.20 तो तू नहीं हो सकता. देख तेरा कॉन्फिडेंस और तू जा सेलेक्ट हो रहा है नहीं हो रहा तू like तीन चांस मिलता है और like देखो सर एग्जाम क्रैक हो गया है देखो सबसे इम्पोर्टेंट उसमें फिजिकल है. छोड़ दे. सर इंटरव्यू फिजिकल तो तू ब्रेक कर. फिजिकल बहुत जरूरी है मेरा दोस्त. तेरा हाइट का अकॉर्डिंग नहीं है और भी बहुत सारा है. 5 किलोमीटर तुझे भगा के दिखाएंगे. फुटबॉल प्लेयर डजंट मीन दैट यू आर फिजिकली फिट. हैव यू हर्ड अबाउट दिस मिलिंद सोमन? नहीं मालूम है. पढ़ो. He is the third fittest person in the world. Indian है, Malayali film. I met him so many times. He looks very old. He is old also, but आज भी वो बंदा जो फिटनेस दिखाता है ना, that much amount of he works out. इंडिया में आपका जो भी इंटरव्यू है, ओरल है, रिटन है, फिजिकल फिटनेस अगर तेरा फेल हो गया ये सब काम राइट. I don't know whether 15th August you will listen to me. At least देखो एक 5-10 मिनट के लिए. बाद में आपका कार्टून चैनल हो या गेम्स हो देखो. एक आधा घंटे के लिए बैठ के देखो. Do not be a waste of time. इनफैक्ट मैं कभी-कभी ट्राई करता हूँ कि अपने बच्चों को लेकर दिल्ली में जाऊँ. मेरा इंक्वायरी 2 बार हुआ. But the rejected me saying कि यहाँ से वहाँ क्यों आ रहा है? क्या रीजन है? आप प्रोफेसर है तो उधर. अरे बाबा मेरा ऐसा इंक्वायरी हुआ जैसे कि मैं बहुत बड़ा आतंकवादी हूँ. तो जिसने BBIP पास किया क्या सर आपको ये हो गया? अरे मेरे हाथ में थोड़ी. इंक्वायरी गोज टू द कमिश्नर ऑफ पुलिस. एंड जब तक वो क्लियरेंस नहीं देगा मैं यहाँ से दिल्ली तो चले जाऊंगा बट आई कैन नॉट सिट नेक्स्ट टू द VVIP. मैंने बोला अगर बैठूंगा तो VVIP के साथ बैठूंगा वरना नहीं बैठूंगा. VVIP मतलब ऑल द MPs where they are sitting उसका नेक्स्ट कैडर में हम बैठ सकते. देखते हैं चांस मिलेगा. Okay, let's write. Where did I stop? Cars to trucks. Rural electrification is done on a large scale. Rural electrification is done on a large scale, helping the farmers to use modern motor pumps running on electricity. Modern motor pumps running on electricity. Change the pattern. Hence, the technological inputs
inputs gave rise to The modern inputs. gave rise to the biggest bloodless revolution. Who can say biggest Yes. bloodless revolution? What was that? Green revolution. So blood. Less. Bloodshed होता है, bloodless होता है. Leading to green revolution, helped India to achieve self-sufficiency in food production. Self-sufficiency in food production. Food. That's it. Now write institutional reform. Shall I explain first or shall I give you the notes first? Explain मतलब we will sleep. फिर आप जब बोलेंगे देखो. Besides technological reforms, government analyzed there was various flaws, various drawbacks, various demerits. The first one Indian government observed was the zamindars or that zamindari was a major drawback. I mean, if you don't understand who is a zamindar or a zamindari system, one of the village person, the headman, will be having acres and acres of land. Some will be 500, some will be 700, or more than that. And we don't envy on him. Let him have his own ancestral property. In that same village, there are more than 300 families who are not having even half a hectare of a land. Forget about an acre. Is it injustice? I say high quality injustice. जैसे मैंने शॉर्ट पर्सन को बोला तो लॉन्ग पर्सन को चिढ़ा गया. तुरंत उसने बोला सर पास होके तो दिखाने बोलो. और रह सकता है इसमें कुछ नहीं. And we can have a very useful debate or a discussion. But then short long वाला को मैं short नहीं बना सकता है ना. उसका पैर नीचे से 2 इंच काट देते या तो मेरा short person को मैं long नहीं बना सकता. God's gifted. Let him be. Maybe after 11th and 12th he might grow double than him also. You never know. But then there are certain things which comes with the family. So all these 300 people were looking at an awe with this farmer. Who? जमींदार और उसके पास 300 एकड़ है. तो दिन रात अपना बीवी बच्चा या फैमिली को कोस के उसको 300 एकड़ मिलेगा. The government said, let us take a step on this. What is the first step they say? Abolish the zamindari system. Do you really think India में इतना आसानी से ये हो सकता था? Fundamental rights you have heard about? How many? उसने तो 12 बोला. आप लोग बोलो. Good politics knowledge you are. हाँ, तो बच्चा बता. पहले fundamental rights कितना है वो तो नंबर ही मालूम नहीं है. Then how would I ask? हाँ, 6. But there was a 7th one also, which was called as right to property. मैं रुको मैं तुम्हारा politics टीचर को बोलता हूँ. मैं क्यों बोलूँ? That is not my cup of tea. I don't teach that. I mean, this is a fundamental right. If I come and ask you, oh भाई, तेरे पास इतना क्या? Oh, ये मेरा fundamental right. 300 एकड़ हो या 3 एकड़, who are you to ask? You know what is fundamental right now? Nobody can challenge you. तो गांव ने बोला यार फसाद का जड़ तो ये है. बराबर है ना? तो under 42nd amendment in the year 1977, government says this is cancelled. जमींदार है, he is not going to listen. How to make him listen? Sir, now you can't give me the reason, sir. Right to property गया सर. अभी कितना है आपके पास? उसने बोला मेरे पास 500 एकड़. No problem. है ना? They brought an act
which was called as Land Sealing Act. What is this act? I mean, look how the government is step by step reducing. The government said 500 एकड़ है, no problem. आप अपना नाम के ऊपर 50 एकड़ से ज्यादा नहीं रख सकते. एक एग्जांपल बोल रहा हूँ, just understand so that you become. And Indians are very smart. मेरे नाम पे नहीं रख सकता ना, ठीक है ना? वाइफ के नाम पे 50, 9 बच्चे के नाम पे 50. अगर 9 बच्चे नहीं है 12 भी बच्चे थे, वो उस टाइम का बात है 47 या 77. उस टाइम पे तो ये कॉमन था, है ना? तो मिला जुला के फिर भी 500 एकड़ उसके घर पे ही आ गए. उसने बोला आपने बोला ना 50 एकड़ मेरे ऊपर नहीं रखने का, मैंने नहीं रखा. अभी वाइफ से पूछो, भाई बोली कहा साहब हमारे पास तो 50 ही है, मेरा बेटुआ के पास है 50. अभी गवर्नमेंट क्या करेगा? तो गवर्नमेंट ब्रॉट वन मोर एक्ट. दे सेड एस कंसोलिडेशन ऑफ एक्चुअली इसके पहले कहा था, ठीक वो भी लिख देता, लैंड होल्डिंग्स. एंड देन ये प्रोग्राम के पहले एक था वो मैं नीचे लिख देता, लैंड टू द टिलर. तो जब इन्होंने 50 एकड़ का स्कीम लेकर आया तो गवर्नमेंट ने पूछा कौन आपके फार्म में काम करता है? वो हमारा ढूंढीबार या जो भी नाम था. आप कैसा ओनर हो? वो तो मेरा नौकर है. कब से? पिछले 5 साल से वही काम करता है उस फार्म में. तो गवर्नमेंट ने बोला वेरी गुड, वी वांट दैट ओनली. इफ एनी पर्सन कंटिन्यूअसली वर्क मोर देन 6 months to 1 year, correct, the land belongs to whom? To the tiller. आप निकलो, तू जमींदार होगा 50 एकड़ का, बट अभी वो लैंड किसके नाम पे गया? टिलर के नाम पे गया. But do you think one tiller is going to till 50 acres? He will be doing half a acre, he will be doing 1 acre, or he will be doing 2 acres. तो बोला नहीं साहब हम लोग बैठ के बात कर सकते हैं. तो गवर्नमेंट बोला अभी आ टेबल में. तो गवर्नमेंट snatched the which land? Surplus land from every farmer or zamindar and redistributed the land. You understand the meaning of the word redistributed? Which land? Surplus land to the whom? To the marginal farmer. Understanding what I'm explaining? Let me come back with the story. Initially we started with whom? Land Sealing Act. What was that act? Followed by which act? Abolition of zamindari. Second, Land Sealing Act. Third, land to the tiller. Fourth, consolidation. So today at least the case of marginal farmers are far less. अभी भी है marginal farmers, ऐसा नहीं कि नहीं है, but the farmers are less. Correct? In fact, हर एक गवर्नमेंट ने फार्मर के नाम पे एक विल बना के दे दिया था, ये लो इस जगह पर इस एरिया में ये जो कोने का लैंड है वो आपका है. So these are which reforms? Which are called as technological के बाद कौन सा reforms आया? Institutional, also called as government reforms. इसके साथ एक last part पढ़ेंगे वो मैं भी explain कर देता हूँ. We have nothing but भूधान, correct? And ग्रामधान. अभी संस्कृत word है या हिंदी word है I do not know. If it is भूधान, we say donating of piece of land. Which land? Agricultural land ही रहेगा, है ना? Donation of entire gram by a sarpanch or a village panchayat head. You know what I mean by gram, na? Entire district. This was started from Maharashtra social worker. Anybody? His name? Acharya Vinoba Bhave. They have not written the word Acharya. What does Acharya stands for? Right. He is a teacher. खाना बनाने वाले को आचार्य बोलते हैं, मारो ना पकड़े, और ही कुछ बोलते हैं, हल्का हल्का हिंदी बोलते. So these things we say today at least the number of marginal farmers are less, all thanks to which reforms? Institution. But still we have to bring more and more reforms. Identify the genuine farmer and let the land give to the genuine people. हमको जब भी फ्री बोला जाएगा पहला अमीर ही जाके लाइन में रुकता है, साहेब मैं इस विलेज का बहुत गरीब है, और गरीब वाला बेचारा बोलते जाने दे, हमको मिला नहीं मिला कोई फर्क नहीं पड़ता. क्यों? कल भी गरीब था, आज भी गरीब है और आगे भी होगा.
बट हमारा जो क्या बोलते हैं आप लोग तुम्हारे लैंग्वेज में जब वो टिफिन नहीं मिलता तो भुक्खड़ की तरह भाग रहे देखो तो 2 टिफिन मेरा खा लिया दूसरा टिफिन के बारे में होता है ना फाइटिंग फॉर टिफिन सो हमारे इंडिया में ये प्रॉब्लम था सो दैट इज व्हाई वी हैव सॉल्व दिस ओके चलो राइट डाउन अंडर इंस्टीट्यूशन फॉर 10 minutes कंप्लीट दैट चैप्टर राइट government soon after independence analyzed government soon after independence analyzed the pathetic situation. You understand pathetic or worsening? Worsening. The worsening situation of Indian farmers, especially the landless or marginal farmers. Landless or marginal farmers. So, several new reforms were introduced. One, abolition of zamindari system. Two, introduction of Land Ceiling Act. 3, land to the tiller program. Land to the tiller. Tiller matlab the person who works on that land. Land to the tiller program. And 5, 4, whatever is the number. Consolidation of land holdings. Consolidation of land holdings. The above reforms were no doubt the biggest of its kind biggest of since implementation took since implementation of it took long years, but practical effect implementation of took long years, but practical effect was much later only. Practically मतलब वो कैसा मतलब इफेक्ट हुआ समझा मैं क्या बोल रहा हूँ practical much later only. ये रीड करके देखो put the heading Bhudan and Gramdan. Now you can start solving because this is only a minor part. After this I will start the new chapter of globalization तो हो गया ना then there is no question of turning to economics now. The economics is completed with you guys. So agriculture के बाद minerals and energy resources है. I think Nerul में ये start कर दिया मैंने. I will start with you guys also. So at least 2 branches are going neck to neck. I hope today you will be beating Nerul. है ना? Because we got one good solid 1 hour. I want you to get your break and come back strongly. Don't sleep.